So I want to know कि आपने start कहाँ से किया था? He randomly DM'd me and asked me why don't you do UIS design. So what can be a right approach as of like 2026 if someone wants to like start a B0 sales? It's like very similar things. I think Ansmera has good list of things about UIS design. So what can be the right approach to get an internship? To find two problems, small problems, solve them as per your capabilities. If you are asking for reference, please be respectful towards someone else's time and never forget to leave the interview room without asking for a feedback. First of all, I'm a huge fan of what you did on your videos. जो आपने initial videos डाले, I guess अभी ज़्यादा videos डले भी नहीं है, but whatever I have watched, I guess 2 assignment related videos you have posted, and I liked both of them. So basically, I'll tell you about myself पहले. So I've been creating content for past 5-6 years अभी, and मैंने as a graphic designer start किया था, and somehow freelancing में लग चल गया, and then I started creating content. उसमें भी धीरे-धीरे कुछ-कुछ हुआ, and right now I'm here. फिर मैंने सोचा मैं मास्टर्स करती हूँ, तो आई एम डूइंग मास्टर्स अभी यूएक्स में. सो यस, दिस इज अ like podcast that will help me also. So I'm very excited about it. Okay. How's the master's going, better? Hi, it is going good. Like you learn a lot by yourself more than a degree. So ऐसे scene हो गया है. Okay. So I want to know about you. Okay. So I am a self-taught product designer. I like to say that because whatever I've done is I've done myself. There was no mentor into the place. Man, see, most of the companies in मैंने काम भी किया है, I had no design manager as such. Kotak Security is the first place where I've gotten a proper design manager. So kind of whoever I was working with, either was a founder or was a PM. So before you could get into why you should do things, it was always about like why even you should care about design. So it was a very weird conversation all the time. So yeah, that's how I navigated my way through it. I started back in 2019, I guess. I don't even remember the timeline, but yeah, during college. And in case people if they don't know, I'm from IIT Madras, but I absolutely sucked at the entire course. I failed in 8 courses. But then luckily I found like love for design in my last semester, which was my extra semester. तो मेरा कॉलेज जा चुका है, मतलब मेरा बैच जा चुका था. It was just me left with juniors, and that's how I started it. Yeah, 6 years into the industry, still good. Oh my God, 6 years, a lot. Yeah, yes. Oh my God, sounds like I'm old. Okay. So I want to know कि आपने start कहाँ से किया था? Like what was the first place where you started from? Yeah. So in back in college, I was absolutely bad at all the stuff they were teaching me. But I was good with arts. So मैं बहुत painting वगैरह करती थी. And the only thing that I was known for apart from me being a trouble kid, another was that I was good at painting and stuff. So I started, but थोड़ा मैंने continuous चालू किया and I started posting all that stuff on my social media page. My friends just asked उनके अच्छा ठीक है, let's try it. And one day, I think one of the seniors of my college, his name is Pratik Goba, very amazing guy. He randomly DM'd me and asked me, why don't you go into UIS design? I had no idea what that is. And I don't know why the guy thought, looking at my paintings, that I could go into UIS design. Now that I'm into design, it's like interesting. Why did you think like painting could convert into UIS? Like what? But anyways, that's how I was introduced to designing generally. When I Googled मुझे थोड़ा बहुत मैंने एक आध कोर्सेज इधर उधर से किए फ्री वंस उस टाइम पे कोर्सेरा एटलीस्ट आपको ऑडिट करने देता था कोर्सेज फॉर फ्री. तो आई डिड लाइक टू कोर्सेज और मेरे को बहुत मजा आया. आई इवन स्टार्टेड डूइंग सम रैंडम शिट इन कॉलेज, जैसे व्हाट्सएप पे आई वाज ट्राइंग टू डू सम रिसर्च. तो मैंने फॉर्म भरा, उसको मैंने किया कुछ नहीं, बट एक्टिविटी वाज सुपर इंटरेस्टिंग. तो मैंने अपने बैचमेट से भरवाया एंड ऑफ कोर्स नाउ दे फाउंड अ थर्ड थिंग टू जज मी फॉर. Yeah, that's how I got into design. And then I think I applied for an internship very rapid. मुझे कुछ ही आता था honestly. And but I got selected for that internship. It was a remote one, only on the basis of that I wanted to learn. I had no idea about design. They also had no idea about design. But they just found me passionate enough. That's it. I think you can do something with that. And that's how it started. And then after that internship, I got another opportunity, another opportunity, another opportunity. So it never stopped. It's still going on. So that's how I started. Accidentally, very accident.
Okay, so you have learned throughout the process. मतलब सीखते गए करते गए वैसे वाला सीन हुआ, right? Yeah, I learned design while I was in the industry already. Got it. Because ना अगर कोई आपका assignment देखेगा, the way you have done the research and all, it feels like that you have learned a lot. और अभी वो समझ में आ रहा है कि वो ऐसे क्यों आया, because आपने सारा जा करके वहाँ पर ही सीखा है, तो it reflects in whatever you Yes. have done. So a very different approach as well, like the way you document, the way you have presented and all. But अभी ना अगर कोई भी, आपने बोला आप सेल्फ टॉट हो, अगर कोई भी सीखना चाहता है तो सबको ये लगता है कि हम कहाँ से कोर्सेज कर ले, कहाँ से क्या कर ले। इंटर्नशिप इज द लास्ट, मतलब आखिरी में सोचते हैं कि जो पोर्टफोलियो बन जाएगा हम सीख लेंगे, उसके बाद इंटर्नशिप करेंगे। सो व्हाट कैन बी अ राइट अप्रोच एज ऑफ लाइक 2026 इफ समवन वांट टू लाइक स्टार्ट अभी जीरो से, और स्टूडेंट ही है और उसको मन नहीं लग रहा है कॉलेज में। Yeah, मुझे एक तो I think that you can start learning it from very basic. जैसे मैंने Coursera से चालू किया, that is I tell you today, basis on whatever knowledge I got from that course was very basic, but did it give me a start to get into the industry? Yes. So you can pick very similar things. I think Ansh Mehra has good playlist on things about UX design. You can start with that, and I think similarly you can. I still think that those Coursera specializations, one was from Google, another was from Canvas. They are still so relevant for somebody who wants to get into the industry. But don't look for a course for your entire life. कि मतलब मैं if you are looking for a course, don't think कि ये course मुझे आगे 10 साल तक का कुछ knowledge देगा, ऐसा कुछ नहीं होता. Don't only look for the knowledge that you want to get started. आपको push मिल रहा है कि हाँ मेरे को industry में entry मिल जाए. उसके बाद because design is a vast field. You can't learn everything today. मैं खुद नहीं बोल सकती कि आज भी मैंने जो सीखा है that's like everything. There's so much to learn. Right? So just look for that push, look for that start, and उसके बाद you can just go ahead. And industry में जाने के बाद then you can figure out that what you need to learn. जैसे I've worked with matrimonial products. I've worked with finance, उसमें भी then I've worked with loan applications. Now I'm working with Kotak Securities, trading investment related, right? Whatever I learned that in different companies is apparently not applicable here. The context changes. So the learning never stops. So if somebody who just wants to start, focus on basics, foundations that you can get from Coursera Coursera. They are still not very expensive. Honestly. 2,000 rupees per month. इतना तो हम थोड़ा invest कर सकते हैं. That has the right knowledge. ठीक है? उसके बाद focus on doing things on yourself. और जितना भी सीखा है, that basic, try to apply it in different छोटे-छोटे projects में. It doesn't have to be right. There is no right. But it just has to be done in your full capacity. आप जितना सोच सकते हो, जितना समझ सकते हो, उस हिसाब से वो दिखना चाहिए that you want to learn. And basis that you will get opportunity. एक बार घुस गए ना, उसके बाद you can figure it out. गॉट इट। तो अभी आपने कोर्सेरा की बात की, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, क्योंकि मेरे को भी आइडिया नहीं था, जो डिग्री तो आई एम डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग डिग्री, बिकॉज आई एम आल्सो अ सेल्फ टॉट ग्राफिक डिजाइनर, सेल्फ टॉट ही यूएक्स डिजाइनर एज वेल। बट जब मैंने कोर्सेरा का कोर्स लिया था, कोर्सेरा का कोर्स है कि सब लोग कोशिश तो करते हैं लेने की कि भाई इसको ट्राई करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी फेमस, बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया है। द थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट द कोर्स वाज द रीडिंग पार्ट। बहुत सारा पढ़ने के लिए देना और छोटे-छोटे वीडियोज़ होना, सो आई फेल्ट लाइक कि वीडियोज़ ज़्यादा होने चाहिए थे, रीडिंग्स इज़ समथिंग मेरे लिए थोड़ा-सा बोरिंग हो जाता है कि पढ़ना पड़ रहा है, वैसे वाला चीज़ हो जाता है। बट स्टिल क्योंकि कोर्स सब कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, मतलब जिसने पैसा इन्वेस्ट किया वो करने की कोशिश करेगा कि वो कंप्लीट कर ले। व्हाट नेक्स्ट? उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके साथ करना क्या है? मतलब वो ज्ञान ले लिया, उसके बाद उसका क्या करना है? दैट इज़ समथिंग Projects. And when I talk about projects, I'm not saying, just say I see a lot of people coming, they create projects, apparently. That Google Calendar is cluttered. Basis on what? Don't create problems, find problems. And लोगों का ऐसा लगता है कि वो कुछ fancy problem लेके आएंगे, that is the only way to get into the industry. No. Look for simple problems, but they are problems. For example, in my case, मैं हमेशा रश में रहती हूँ, एकदम लास्ट मिनट में चीजें करती हूँ. So I tend to forget a lot of things. मैं हमेशा घर की चाबी भूल जाती हूँ. There have been times when I have been locked out of my house. मैं 300, 400 रुपए की चाबी बनाई है, बिकॉज़ चाबी वाला जब घर पे आके बनाता है तो उतने पैसे लेता है. आप वैसे जाओ 60 रुपए में बना देता है. Now this is a problem. I try to solve that. जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा है ना, उसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करो. And so that course also talks about users.
right? Understand who they are, what are their problems, what are their pain points. So उन चीजों पे यहाँ पे apply करने की कोशिश करो. And another way to find problems is don't try to find other people's life. Find it around yourself. And this works especially if you're a fresher because ये आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा to find problems, you find projects and problems that way, and B, chances are कि अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो और भी लोगों ने फेस करी हो, राइट? लुक, ऑब्जर्व योरसेल्फ कि मैं डेली बेसिस पे मुझे कौन सी समस्याएं आ, राइट? एंड देन ट्राई टू ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, राइट? देन यू गो इनटू द डायरेक्शन. देन जितने भी आपने अभी तक पढ़ा है, परसुमा हो गया, right, research हो गया, you find your friends, you don't have to go and talk to 500 people. If you have 5 friends, you can find 10 relatives, उन्हीं से बात करो. Try to solve it in your capacity. That is absolutely fine. Yeah, don't think कि मतलब 500 लोगों का रिसर्च लगेगा तभी मेरे को कोई लेगा, ऐसा कुछ नहीं है. What people are trying to understand is their approach. Can you do it? If you can do it in a setup of like 5 people, you can do it. You can scale it first. So do projects, very important. Don't run behind theory because I kid you not, अभी theory अगर आप मेरे से पूछ रहा, मेरे को भी 2 पैसे की नहीं है. There are times when I am doing a workshop, I know the concepts, I know the ideas, but do I remember the terms? Absolutely not. So sit for a workshop, I first go and read all that stuff first myself. या फिर इस term को क्या बोलते हैं? Because over time उस term की कोई value नहीं है, but उस concept की value है, उस idea की value, उसके practical usage की value, उस पर focus करो. सो ट्रू. आपने अभी प्रॉब्लम्स का बात किया एंड प्रॉब्लम से मुझे समझ में आया कि मतलब हर बच्चे के लिए जो भी स्टार्ट कर रहा है ना, उसके लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल होगा. सो बेटर क्या हो सकता है कि वो पहले थोड़ा देखे, कहीं से इंस्पिरेशन ले, थोड़ा जो बना बनाया स्टफ है वो देखे. सो यू माइट हैव आल्सो स्ट्रगल्ड इनिशियली. आपने भी सोचा होगा कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है, ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कैसे कर पा रहे हैं या करते कैसे हैं. तो आपने कहीं से देखने की कोशिश की होगी. अब ना ग्राफिक डिजाइन में तो लोग पिंटरेस्ट जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं फॉर द केस स्टडीज एंड यूएक्स. ऑल्सो यूएक्स के बारे में नरेटिव क्या सेट है यूआई यूएक्स के बारे में कि इट इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग द स्क्रीन्स, कि सुंदर सुंदर स्क्रीन बना दी, वेब डिजाइन बनाया, मोबाइल ऐप रीडिजाइन कर दिया. बट इट इज अ बिगर थिंग, मतलब उससे भी बड़ा है. सो टू गेट आइडिया अबाउट इट, कहीं से हम अगर सीखना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, लाइक अबाउट रीड करके या कहीं से, तो वो रिसोर्सेज इफ यू हैव रेफर्ड सम एंड यू कैन शेयर. यार आई थिंक रिसोर्सेस के टर्म में एक दो चीजें इज गुड इनफ. एक आईडीएफ सर्किट इंट्रैक्शन डिजाइन फाउंडेशन इज अ वेबसाइट they have design related, but it's all theoretical. Yeah, if you want to get into good theory of design, they have amazing courses. I personally have like 23 certificates of them on my LinkedIn profile. I love that website so much. Yeah, but rest, if you ask me in terms of what you should have resources, people are the right resource. आप किताबें पढ़ने से ज्यादा, आर्टिकल्स पढ़ने से ज्यादा, लोगों से मिलकर और उनसे बात करके ज्यादा सीखो. That has been like the फंडा ऑफ माई लाइफ. मुझे जितना भी ज्ञान है, मुझे लोगों से ज्यादा है. मतलब मेरा भी अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है. मैं किताब के 2 पन्ने से आगे बढ़ ही नहीं पाती, तीसरे पे मेरे को नींद आ जाती. आई लाइक टू लर्न फ्रॉम पीपल. तो जो भी अपने प्रोजेक्ट के गो मीट पीपल. बहुत डिजाइन इवेंट्स होते हैं, ऑफलाइन जा सकते हो तो ऑफलाइन जाओ, ऑनलाइन जा सकते हो तो ऑनलाइन जाओ. बहुत सारे वर्कशॉप्स वगैरह लोग कराते हैं, राइट? एंड सी थिंग, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया जिसके बारे में बात करो. दूसरे जैसे मैं भी जब तक मैं कॉर्पोरेट में थी ना, ओनली कॉर्पोरेट में, व्हेन आई वाज नॉट डूइंग कंटेंट क्रिएशन, आई वाज नॉट मीटिंग, तब तक मुझे भी एक इम्पोस्टर सिंड्रोम था कि व्हाटएवर नॉलेज आई हैड, इज दैट इवन रेलेवेंट? मतलब इज इट ना, ऐसा तो नहीं कि मेरा नॉलेज कम है या गलत है, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाइडलाइन ही नहीं था, मेरे पास कोई चेकलिस्ट नहीं थी. पर जब मैं लोगों से मिलने लगी, जब मैं वर्कशॉप्स करने लगी, दूसरों के वर्कशॉप्स अटेंड करती, people who have decades of experience, 20 साल का experience, that is when I realized कि ऐसा कुछ नहीं है. There is nothing like that. ठीक है, एक्सपीरियंस, डिजाइन एक्सपीरियंस का ऐसा कुछ नहीं है कि ये चेकलिस्ट ये होना चाहिए. You learn a lot from meeting people, talking to people, observing people. तो वो करो. रिसोर्सेज में एक्चुअली नॉट जस्ट दो. मैं खुद ने, मैंने इससे ज्यादा नहीं पढ़ा है. ऐसा उनके एक्सपीरियंस का कोर्स करा और आइडियाज आगे मैं तो कहीं नहीं भेज. Generally, I've never, but I have learned a lot from people. And it is not just applicable for design. जितना भी मुझे थोड़ा बहुत मार्केटिंग के बारे में आता है, डेवलपमेंट के बारे में आता है, over time you have to get ecosystem का idea for you to strategize and do things. If you want to go beyond the screens, you have to do other things.
And in terms of my knowledge, I could have done course, but most of the courses whatever they teach are not applicable to real life. मैंने भी जितने research methods आज तक पढ़े थे ना मुझे याद है ना को apply करने को. But things that I learned from people, did that help me earlier. So go meet people. Very well. That is the best skill you can have. That's where the best knowledge is. Please go. Yes, networking is the key. Oh, quote in it, your network is your net worth. So yes, I guess people Be move forward. shameless. Be shameless. Matlab, I also see a lot of people who go to events, but they're very shy. Like they're so focused on just asking the right question. कि कहीं मैं down sound ना कर जाऊं. But the smartest person in the room is who asks the dumbest question. Because you are the person who get the best kind of work. You didn't hesitate. So don't hesitate. If you're going somewhere, please ask questions. Doesn't matter. कोई अपने घर का आंसू पानी नहीं भर रहा है. अगर भर रहा है तो बात अलग है, but please ask questions. So overall, what I personally feel कि अगर internship से इतना सारा सीखने को मिल रहा है, so इंसान का पहला फोकस होना चाहिए कि वो internship ले पाए. अभी फिर यही बात हाँ, तो अभी यहाँ पे यही दिक्कत आती है कि सब लोगों को internship पे अप्लाई करने के लिए अगर जैसे इंटर्नशाला पे वो अप्लाई कर रहे हैं, so they have to have a single मतलब एक प्रोजेक्ट तो उनको डालना पड़ेगा, कुछ तो डालना पड़ेगा. या अगर आपको रेफरेंस मिल रहा है तो थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट वो भी बनाने के लिए टाइम लगता है. So what can be the right approach to get an internship, to create a project? Like a project I told you that you find your problems around yourself, find two such problems, doesn't have to be big. Okay, but they are supposed to be right problems. Please don't redesign Gmail. Please don't redesign calendar. मैं देख पक गई हूँ इस process. Honestly. Okay, so find two problems, small problems, solve them as per your capabilities. Then आपको लगेगा for you to even showcase that I can do things. Right? And then start applying for internships. अभी and also have your resume right. मतलब मेरे को भी टाइम लगा to understand that resume has a value. Honestly, मेरे को 2 साल पहले ही समझ में आया resume has a value, but it can get the knowledge right now in stages. And when I say the pressures now in terms of I kid you not, I've seen resumes 4-page long resumes for interns. मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है सब पढ़ने. मैं बता रही हूँ और मेरे पास 6 साल के बाद भी इतना लिखने को नहीं है. आज से क्या आपके पास पहले दिन पे इतना लिखने को है, right? Concise it to 1 page only. Don't go fancy. Please keep it very simple. अपने projects उसमें लिख दो because you don't have the work experience. So it's okay. You can mention your projects, put your portfolio link. And then in the now the interview processes where you can sort of जैसे portfolio क्या है आजकल लोग चला सकते हैं. You can't tell honestly कि ये legit है नहीं है unless you go into the interview process. And once you go there, now this is your chance. Grab it. So be as honest you can, be as transparent as you can, be as passionate as you can. मतलब don't अगर किसी ने आपसे कुछ सवाल पूछ लिया, it's absolutely fine if you don't know the answer, but don't wriggle out of it. Simply say, "Oh, I have not heard about it. या मुझे इस concept के बारे में नहीं पता है." Just you can show your interest into it, but sounds interesting. मतलब after the interview, if you have some time, can you share some resources that you know about? That shows that you are willing to know. सबको पता है interns से आप सब कुछ नहीं expect कर सकते. That is given. ठीक है. तो with interns we are not looking for कि आप सब कर पाओ. With interns we are कि आप सीख पाओ. Got it. तो वो पैशन दिखाओ. Have a conversation. ठीक है. देखो अगर जब तक वो आपका आसपास नहीं पड़ता है, अगर वो आपको जज भी करते क्या फर्क पड़ता है. मैनेजर बन जाएगा तो बात करेंगे. For now this person is your not manager. Do you have all the freedom in the world to ask questions? Please do. This is your opportunity. Got it. So true. अभी internship की हम बात कर रहे थे, so we'll be having a project. We'll apply. अपना resume ठीक कर देंगे हम. But अभी जब आपने बोला interviews का, so I want to know about your interview experience. आपने internship जब starting में दिया था, इंटरव्यू हुआ था कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट के बाद असाइनमेंट के बाद? Well, that's my interview, the first one, which is a remote internship. So, because I feel passionate, I didn't take it as an interview. मुझे तो honestly उम्मीद भी नहीं थी कि कोई मुझे opportunity क्यों देगा ना. मेरे पास design degree है, right? अगर मेरे को कभी IIT का डिग्री मिला भी तो उसमें 8 फेल लिखे होंगे. I would someone give me an option. But I just wanted to learn. So they gave me a problem statement. उनका भी assignment आया था.
and I tried to do it in whatever way possible. ठीक है, मुझे जितना समझ में आ रहा था, I had some ideas in my head, so I was like, "Okay, let me just try." तो मैंने एक पेपर पे पेन पेपर से I made like a full strategy out of it and I submitted it. हाँ, so I was telling about कि internship में whatever assignment I got, I just tried to मेरे पास ना कुछ आइडियाज थे उस प्रॉब्लम को लेके और मैंने बस उनके बारे में मेंशन कर दिया लाइक दिस इज व्हाट वी कैन डू व्हाटएवर आइडियाज है। मुझे तो पता भी नहीं था उस टाइम पे दैट देयर आर थिंग्स कॉल्ड फिजिबिलिटी कि ये मतलब इंजीनियरिंग वाइज ये पॉसिबल है या नहीं। आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस थिंग बट आई जस्ट डिड इट एंड दे हैड वन मोर कैंडिडेट आई थिंक नॉलेज वाइज ही वाज बेटर देन but these people they selected me only on the basis of that I was very passionate and they said it on my face that we are not selecting you because you have the most knowledge, we are selecting you because you have you're passionate about, we could see it. So that's how most of the time मेरे को ऐसे ही opportunities मिले. My last company it was a education loan related company. I had no idea about fintech and the founder asked me to research some what do you call it? PG. He asked me to research some PGs. In my head, the PG meant paying guest. I said it also, I guess. But after I was hired, and that's when I realized, oh, PG meant payment gateways. Oh my god. Oh God. Yeah, so it doesn't matter. I mean, I think I have gotten my opportunities most of the time because I just wanted to learn. That's all. And I think even today, if I hire somebody, मैं भी अगर किसी का interview लेती हूँ, that is what we live for. A intense, which means do you want to learn or not. वो बहुत जरूरी है. There, I have found people who have great knowledge, design, education background से but they don't have the right intent. उनको आगे सीखना नहीं है शायद उन्होंने. I'm not saying that everybody has that, but the kind of people I came across. And उनको लग रहा है कि मैंने जितना कॉलेज में सीखा वो उतना ही है and then they never evolve. मतलब they're legend like outdated at this point. जो उन्होंने 10-12 साल पहले सीखा था आज भी वो उतना ही कर रहे हैं and world has moved on. So, be passionate, be honest. अगर कुछ नहीं आता है बोल दो कोई दिक्कत नहीं है कुछ नहीं हो रहा है. It's very important. मतलब उल्टा से घुमा के बोलेंगे और हमें से पट जाएंगे नहीं पटेंगे वो पता है हम लोग आ चुके हो वहाँ पे. To wrap this up, मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन है लाइक यू आर इन आइडियल सिचुएशन अभी अगर जो कोई स्टार्ट कर रहा है उसके लिए आपकी सिचुएशन आपकी पोजीशन आइडियल है कि भाई मुझे भी एक अच्छा सुंदर सा बढ़िया सा कंपनी हो जहाँ पे मैं अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा पाऊँ. सो फॉर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग अभी ये जो वीडियोस देखेंगे हो सकता है वो 12th पास आउट करा हो बच्चा कॉलेज के साथ इस चीज़ को परस्यू करना चाहता है पेरेंट्स के कारण थोड़ा सा दूसरी डिग्री में कर रहा हो एंड देन कोई लोग हो सकते हैं जो कि डिज़ाइन ही कर रहे हो बट अलग-अलग मतलब पोजीशन पे कई लोग करियर ट्रांजिशन कर रहे होंगे अपना बैचलर्स के बाद. तो उन सबको मतलब एक प्लेट पे रख के क्या उनको रोड मैप दे सकते हैं दैट दे कैन फॉलो अलोंग फ्रॉम टुडे और इन नेक्स्ट 6 मंथ दे कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस इन देमसेल्व्स और उनके करियर में भी. It is absolutely not fancy. Okay? Again, it's very people try to make it sound like crazy. It's not crazy. They get the basic foundational knowledge. Okay, so you spend let's say 2 months. कोई बात नहीं मतलब you can do Coursera courses in a month or 7 days also, but I want you to spend 2 months for this. Understand each and every concept. It's okay if you forget terms, but get the concepts. Okay, so you can either go to Coursera, you can also go to ITS. They have some beginner level courses, and it's legit very good. Okay, once you have the theory done, then you start working on your case studies or projects. Again, find 2 simple problems around yourself. Don't create problems around yourself. Observe yourself कि मुझे on a daily basis कौन सी दिक्कत हो रही है, right? Then try to solve them in your own capability. There is no right answer. There is no wrong answer. The answer that you will get is basis on your research, basis on how you have approached it, right? The context that you have. So don't get worried about that. Whatever I'm doing is that right or wrong. Absolutely nothing. It is just relevant or irrelevant. As simple as that. Okay, then you work on your resumes. Resume, please keep it extremely simple. You don't have to lie. देखो जो तब तक ना बोले जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो कि पकड़े नहीं जाएंगे. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही क्रेजी लेवल बोलकर आप मेरे को कन्विंस कर लेंगे तो आप बोल दीजिए बट मेरा एडवाइस है मत बोलिए. एनी लेवल स्किल व्हाटएवर यू हैव आप उसको डाल दो. वर्क एक्स आपके पास नहीं होगा अभी तो प्रोजेक्ट्स डालो एक्सपीरियंस की तरह, राइट?
Even with your portfolio and case study, keep it simple. Don't have to go fancy. But आपने जो भी किया है ना सब document करो. As if people are seeing my design assignments, the presentation fancy. तो मैं तो सिग्मा का ही दे दिया था, बच्चा ही अपने presentation बताए. But it just meant about the conversation about how I approach it. तो आपने जो भी किया है, it's okay if your case study is going lost. Fine. But put everything. Right? उसके बाद you start applying. If you are asking for reference, please be respectful towards someone else's time. Okay? I get so many DMs about a job दे दी, job लगवा दे. अभी चाचा का लड़का थोड़ी है. ये कैसे होगा? मतलब how is this gonna happen, right? So write a small note about who you are, okay? What you're doing, why you want to join this company, whatever. अगर आप किसी से उसी company से referral मांग रहे हैं, and don't forget to attach the job description का link. जैसे sometimes you end up asking referral from somebody who's from a different department. He wouldn't live, right? But he can refer it. तो बस job profile का या description का उसको link दे दो कि this is the job profile or description I'm applying for. Can you refer me for that? That's it. Okay, इससे ज़्यादा fancy कुछ करने की ज़रूरत नहीं. And then show up for interviews if you get any. If you don't get any, then maybe you have to go. That's a feedback for you that something is going wrong, right? You can go back and check your case studies, your resume. You can also go ask teachers. There are so many design communities out there. While you're doing all this, please go meet people. Okay, please connect with people, talk about your projects, talk about your case studies, take feedback. Absolutely. That is the best way for you to learn. And in the interviews, while you're there in the interview, don't try to focus on answering everything. Just focus on being honest. In the interviews, be very honest. Okay? Again, it's not about right, it's not about wrong answer. It's about the right approach and the right intent. So that you want to know. If you don't know anything, that is absolutely fine. But then ask for further questions. Where can I learn this? Or something like that. Just show your interest. And never forget to leave the interview room without asking for a feedback. Never. And I have gotten the best feedback in my life so far in an interview round. So अभी तक मेरे को देख के समझ में आ गया होगा कि मैं बातें बहुत ज़्यादा है. But when I do so sometimes I don't let the other person speak. And that's what I got as a feedback from Kotak का assignment round के बाद. This is what I got as a feedback. Because you speak a lot, you tend to not give the other person space to breathe and ask questions. So try to do that. But they were still kind enough to hire me. Thank you. So that is something that I've incorporated in my life now. I don't listen to speak, I listen to actually consume what is happening. Because always ask for your feedback because that is when you will know if you do not get fired, what went wrong. You'll know. Was my communication wrong? Was my case study wrong? Or did I not do something right? Interview round में आपको समझ में आएगा. And just keep appearing for it. Yes, I'm pretty sure you'll crack that interview one day. Assignment वगैरह के लिए now you have some videos out there. मेरे type से happy nobody was kind enough to put their assignments out. But you have those things. You just follow that. Try to do everything in your best capability, and you'll get it. I kid you not, you'll get it. There are so many people that I've mentored. They have switched their career within 2 months. They have gotten their jobs within 2 months. Yeah, only because they had the right intent. They really wanted to do it and they did. There's the only roadmap. मतलब I can't give you कि ऐसा करो वैसा करो 4 boot camps करो because मत करो. ठीक है, जब आप एक बार कमाने लग जाओ ना उसके बाद you can go and invest. Idea courses मैंने कमाने के बाद किए. Then I could afford the money to do that. इससे पहले मैंने Coursera ही किया था and that worked wonders for me. Foundation is still what is relevant to the industry. AI वगैरह सब कुछ आ गया है. But if you go into the interview, they will still ask you questions about the very bare basics. There is no conversation, or at least I don't know conversation about AI. I find some candidate once in a while, they're like, I'm an AI product designer. I'm like, that's like equivalent to saying I'm Sigma product design. एक्चुअली में एआई का ना ऐसे लोगों को उस तरफ से सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है दैट यू आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड एंड नथिंग इज लेफ्ट. स्क्रीन्स आर बीइंग जनरेटेड बाय इट एंड ऑल. बट स्टिल जो ओरिजिनलिटी है, द आइडियाज, द थिंकिंग कैपेसिटी दैट ह्यूमन हैव, वो तो है ही नहीं उसके पास. बेचारे के पास वो डेटा के ऊपर वर्क कर रहा है. तो ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं खत्म आती है. आप बना लोगे, AI बना लेगा, बट बनाएगा क्या? वही ना जो आप बोलोगे. तो दैट इज तो वही तो हम Figma पे भी if you go and make something,
बनेगा वही ना जो आपने सोचा है. So that is what we evaluate in interviews, right? Your thinking, your approach. Screen पर आप AI से बनाओ, आप पेन पेपर पे बनाओ, आप पेपर में बनाओ, आप स्केच में बनाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं है. आउटपुट आना चाहिए. I've met a few people in the interviews who have made like good projects in AI using AI and stuff. But the moment you start asking them questions, say, why have you done this? There is no answer to why. There's always like, हाँ AI से बना है. But ठीक है, but क्यों बना है? They have no answer. Versus they have made something with Sigma, but you have the answer to everything. I'll hire you, no doubt. So focus on thinking. Why? Reasoning is important. The whole why? Why? Okay. So I thought कि हम ये आखिरी क्वेश्चन रखेंगे लेकिन मेरे पास एक और क्वेश्चन है, so हम उसके साथ एंड करेंगे. You are right now working in Kotak, है ना? Okay. So ये अपॉर्चुनिटी जैसे कि कई बार होता है ना, लोग बहुत छोटे-छोटे जगह से आते बड़े-बड़े सपने देखते हैं कि हमें यहाँ पे काम करना है, वहाँ पे काम करना है. बट टू गेट अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, इंटर्नशिप, गेटिंग एन इंटर्नशिप इज़ अ डिफरेंट थिंग कि हमने यहाँ पे इंटर्नशिप किया, सीखा उसके बारे में और जानने की कोशिश की. बट एक कंपनी में जाकर के एक पोज़ीशन लेना, लेट्स से जूनियर डिज़ाइनर या प्रोडक्ट डिज़ाइनर या व्हाटसएवर, वो थोड़ा-सा अलग हो जाता है. तो उसके लिए भी इंटर्नशिप से स्विच करते-करते आ जाता है, बट स्टिल देयर वुड बी सम वे टू गेट अपडेटेड अबाउट द जॉब पोर्टल्स और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कैसे पता चलता है, कैसे होता है. तो इट कैन बी कन्फ्यूजिंग फॉर सम पीपल. My funda is actually pretty simple. I don't use any complex whatever. Most of the opportunities, the Kotak is not. I didn't crack it because of any reference. I actually normally job post डाला था, मैंने apply कर दिया. That's how it happened. But most of the opportunities that I get are from LinkedIn itself. But I have observed that people usually don't post an official role, matlab hiring for a role sometimes. You'll find a lot of the role hirings in a normal LinkedIn post. So I would suggest, and I see that like for the internships and for full-time role as well. Official उनका कोई role open नहीं है, but they put it in normal post on LinkedIn. So I would suggest that you should keep your LinkedIn profile very good. अच्छे design connections बनाओ. Send. So I have a very good network of designers across. ठीक है, मेरे जितने भी connections हैं, they're all designers. So via match, वगैरह, I get to see all these posts where people are hiring and stuff. And then I put it in my Instagram story for people to look at it. मेरा पर्सनल किसी और प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है फॉर सम रीजन. I kid you not, there was a time when I paid the money to that platform because they said that we do, and I was so new. I had decided, मेरे दे भी दिए. Yeah, my experience to other platforms have not been nice. LinkedIn is what I think is the source of truth for me. So the last question, finally the last question. Any last advice, एकदम final advice किसी को अगर आपको देना हो, whoever is starting is want to switch or want to start fresh. Any last advice? So my last advice, irrespective of the field actually, be it design, be it anything else, be very curious. जब तक आप सीखना चाहते हैं, आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. The moment you stop learning, I think that like उसके आगे फिर नहीं हो पाएगा. I've seen people who come from good backgrounds, come with good education, but I've seen their life in a lot of difficulties and corporate because they stop learning and they go on learn. So be very curious, be very honest. It's okay if you don't know something. Be transparent, but be very passionate. That's passion or curiosity बनी रहेगी. आप कर लो. Irrespective of the field, doesn't have to be design also. There's continuation as well of you, Shruti, you and me as well. हमें आता था क्या नहीं आता था ना, but we're trying to do things because we're just curious and passionate about this thing. सही बात है. अभी भी नहीं आता, अभी भी सीख ही रहे हैं. Yeah, exactly. And it's gonna be learning throughout. मतलब मैं जैसा लगता है that dialogue from ये जवानी is very relevant. कि मैं दौड़ना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ, गिरना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, बस रुकना नहीं चाहती. If that is the philosophy of your life, I think you will get to very. Very true. So true. Oh my God. Thank you so much. It was really a fun experience. निशा, आपको होस्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा. All the links जो भी आप जहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हो, so will be in description, guys. You guys can check it out. Check out her channel. हम उनके साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं इस पे, तो आपको आ रहा होगा नीचे पे, so you can check her channel out as well. All right. Thank you so much.